I welcome you to the multiple choice question section of the second lecture. टॉपिक चल रहा है रोटेशनल डायनामिक्स और आज सॉल्व करेंगे उसी के साथ दैट इज सर्कुलर मोशन के साथ जुड़े हुए कुछ सवाल और उनके जवाबों के बारे में. तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द वेलोसिटी वेक्टर एंड एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंशियल है, एंगुलर वेलोसिटी ऐसे घूम रहा है सपोज पार्टिकल, वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंशियल है और एंगुलर वेलोसिटी ऐसा है. सो दीज टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर. पहले सवाल का जवाब है बी सेकंड ऑप्शन. पहले सवाल का जवाब है बी सेकंड ऑप्शन. दूसरा सवाल सेकंड क्वेश्चन. A particle performing UCM, the particle is acted upon by dash. अब एक पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके वेलोसिटी को बदलने के लिए उसके ऊपर एक ही एक्सेलरेशन काम करता है जिसका नाम है सेंट्रिपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. द आंसर इज बी, रेडियल एक्सेलरेशन. द आंसर इज बी, रेडियल एक्सेलरेशन. परपेंडिकुलर टू ईच अदर and this is a radial acceleration. Third question, तीसरा सवाल. If a body is moving with uniform speed v in a circle of radius r, then the angular acceleration will be how much? UCM कर रही है बॉडी. अगर बॉडी UCM कर रही है तो अल्फा which is equal to d omega by dt will be d by dt of constant, क्योंकि UCM में ओमेगा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है. UCM में अल्फा इज जीरो. आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन इज डी फोर्थ ऑप्शन. डी फोर्थ ऑप्शन. चौथा सवाल. इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल डिस्क्राइबिंग इक्वल एंगल्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, UCM है, about a fixed point, its velocity vector का क्या होता है? तो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है. वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है. वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है और डायरेक्शन लगातार बदलती है. द आंसर ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन इज इट्स वेलोसिटी वेक्टर. क्वेश्चन नंबर 4 वेलोसिटी वेक्टर है क्या? इट्स वेलोसिटी वेक्टर. ओके, वेलोसिटी वेक्टर के बारे में रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे टेंजेंशियल, यहाँ पे ऐसे टेंजेंशियल, यहाँ पे ऐसे टेंजेंशियल. तो वेलोसिटी वेक्टर विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट चेंजिंग डायरेक्शन. द आंसर ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन इज velocity vector changes in direction. The answer is A, first option. The answer is A, first option. पांचवा, fifth question. A particle is moving in a circle with constant speed, UCM again. The acceleration of the particle the acceleration is directed towards the center and has magnitude r omega square सो इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन लगातार बदल रही है. देयरफॉर द आंसर इज हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड चेंजिंग डायरेक्शन. तो यहाँ सिर्फ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से ही, तो आंसर आएगा ए, फर्स्ट ऑप्शन. छठा सवाल, सिक्स्थ क्वेश्चन. अ पार्टिकल इज मूविंग इन UCM with radius r. Then the distance covered by the particle in one revolution will be equal to the circumference of a circle. The distance covered in one revolution will be equal to the circumference of the circle, which is 2 pi r. The answer of the sixth question is A, first option. The answer of the sixth question is A, first option. सातवां सवाल. A particle is moving in UCM radius r. In half a revolution, the displacement is how much and the distance covered is how much? इधर से इधर गया, half a revolution.
the displacement is this, which is equal to pi r, and the distance covered is displacement is 2r, and the distance covered is pi r, and the distance covered is pi r. ये distance covered है और ये displacement है. कौन सा है जवाब? 7वें सवाल का जवाब है, डिस्टेंस पहले पूछा है, क्या पूछा है? पहले डिस्प्लेसमेंट है. ओके, डिस्प्लेसमेंट इज 2r and pi r. The answer is C, third option. The answer is C, third option. 8वां सवाल, 8th question. When a particle moves in circle with uniform speed, speed अगर constant है तो, the answer is B. Both velocity and acceleration change. Velocity change होती है क्या? Yes. ये velocity इधर ऐसी है, इधर ऐसी है, इधर ऐसी है velocity, इधर ऐसी है. Acceleration change हो रहा है क्या? Yes. यहाँ ऐसा है, यहाँ इधर है, यहाँ इधर है, यहाँ इधर है. So acceleration भी change होता है और velocity भी change हो रही है direction में. The answer is B, second option. The answer is B, second option. सवाल नंबर 9, 9th question. A vector is drawn from the center of the circle to any position of the particle on the circumference of the circle. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? A vector drawn from the center of the circle to the position of the particle is called radius vector or the position vector. It is referred to as the radius vector or the position vector. 9वें सवाल का जवाब है radius vector, yes. Position vector, yes. The answer is D. The answer is D. Both. ये है B और ये है D. Both A and B. Okay. बात करते हैं 10वें सवाल की. 10th question. In non-uniform circular motion, the acceleration of the particle is how much? बड़े गौर से देखिएगा, ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक सेंट्रीपेटल फोर्स होगा टुवर्ड्स द सेंटर. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सर्कुलर मोशन तो है जिसके लिए जरूरी है सेंट्रीपेटल फोर्स, वो रहेगा, और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के साथ साथ दूसरा एक्सेलरेशन होगा टेंजेंशियल, which is equal to r alpha. This is equal to omega square r. So there will be two accelerations in case of non-uniform circular motion. There will be two accelerations, one towards the center which maintains the circular motion and second which increases the speed, that is tangential, और इसका resultant will be the net acceleration. इसका resultant will be the net acceleration. जवाब क्वेश्चन नंबर 10 का आएगा the resultant of centripetal and tangential acceleration. The answer is C, third option. सवाल नंबर 11, 11th question. In the vector relation among radial acceleration, angular velocity and linear velocity. Radial acceleration, answer is B. A radial is equal to omega bar cross V bar, omega bar cross V bar. कैसे आया? देखो, पार्टिकल गोल घूम रहा है और गोल घूमने वाला पार्टिकल इधर है, वेलोसिटी इधर आएगी मेरी तरफ, एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ आएगा. इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, और ओमेगा ऊपर है, ओमेगा इज ऊपर. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, दिस इज ओमेगा, राइट? देन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, टेंजेंशियल है, द वेलोसिटी इज टेंजेंशियल. सो ओमेगा बार क्रॉस आर बार, ओमेगा बार दैट इज द ओमेगा वेक्टर वर्टिकली अपवर्ड, सर्कल ऐसे हो रहा है क्योंकि क्रॉस वी बार वेलोसिटी है, टुवर्ड द सेंटर आया रेडियल एक्सेलरेशन. द आंसर विच इज राइट इज रेडियल एक्सेलरेशन इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ओमेगा बार क्रॉस वी बार. है क्या ऑप्शन? यस, द आंसर इज बी, सेकंड ऑप्शन. सवाल नंबर 12. द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन. लगातार बार बार बात चली है ये कि यूसीएम इज एन एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज देयर इज चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड नो चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड. देयरफॉर द आंसर ऑफ द
12th question is the motion accelerates due to change in velocity. There is change in velocity. So velocity changes, it's acceleration. The answer of the 12th question is A, first option. 13th question, 13वां सवाल. If the angle between tangential acceleration and resultant acceleration, if the angle between tangential acceleration and resultant, ये tangential है और ये resultant है, इसमें का एंगल tangential और resultant में का एंगल उन्होंने दिया है. If this angle is alpha, okay, let it be alpha. Then the direction of the resultant, if the angle between tangential and resultant acceleration in non-uniform circular motion is this, then the direction of resultant will be dash. So it will be tan theta या tan alpha is equal to opposite tan alpha opposite upon adjacent AC upon opposite upon tan alpha होता है opposite upon adjacent, that is AT. Alpha is equal to tan inverse of AC upon AT. Tan inverse of AC. We want to find out alpha, which is tan inverse of AC upon AT. उनको किसमें चाहिए ये? ओके, AC चाहिए वहाँ पे, ये रिजल्टेंट नहीं चाहिए. ओके, this has to be AC. So tan inverse of AC upon AT, the correct answer is B, second option. यहाँ पे उन्होंने वो लिखते वक्त क्या दिया, क्या देना चाहिए? If the angle between tangential acceleration, that is this tangential acceleration and resultant acceleration, tangential acceleration और resultant में का एंगल अगर अल्फा है, then direction of the resultant acceleration will be dash. The answer is B, second option. Question number 14. The angular displacement in circular motion is dash. Angular displacement जिसको लिखा जाता है थीटा, जो मेजर किया जाता है रेडियन में, या डेल्टा थीटा जिसको मेजर किया जाता है रेडियन में, it is a dimensionless quantity. It's radian है लेकिन it is dimensionless quantity. The answer is B, second option. The answer is B, second option. सवाल नंबर 15, 15th क्वेश्चन. द इनफाइनाइट सिमल, ये जो होता है ना, ये इनफाइनाइट सिमल है, वो सही वेक्टर है. द इनफाइनाइट सिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ ट्रू वेक्टर. इट इज अ ट्रू वेक्टर, या इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये जो है ये ट्रू वेक्टर है, ये ट्रू वेक्टर नहीं होता है. दिस इज अ ट्रू वेक्टर. दिस इज अ ट्रू वेक्टर. सवाल नंबर 16. The direction of angular displacement delta theta is given by dash. We use right hand rule, screw rule, whatever you want to call it. The answer is right hand thumb rule, right handed screw rule. The answer is both B and C. The answer of the 16th question is D, fourth option. D, fourth option. Question number 17. According to the right hand thumb rule, the direction of angular displacement delta theta की direction when the particle is performing uniform circular motion, delta theta is perpendicular to the plane. ऊपर नहीं तो नीचे, ऐसे गोल घूम रहा है तो, ऐसे गोल घूम रहा है तो ऊपर, ऐसे गोल घूम रहा है तो नीचे. It will be perpendicular. It's always perpendicular to the plane in which the particle is performing circular motion. Therefore, the answer of the 17th question is C, perpendicular to the plane of the circular path. Perpendicular to the plane of the circular path. सवाल नंबर 18. The rate of change of angular displacement in uniform circular motion. The rate of change of angular displacement is omega bar. This is angular velocity. This is angular velocity. Rate of change of angular displacement is angular velocity. 18th क्वेश्चन का आंसर जो है वो है ए, फर्स्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19.
the rate of change of angular velocity with respect to time. Okay, d by dt of omega bar, it is alpha bar, that is called as angular acceleration. It is angular acceleration alpha, that is B, second option. सवाल नंबर 20 आज का आखिरी सवाल है. या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन डैश. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है डेल्टा थीटा, इट इज मेजर्ड इन, अभी अभी हमने किया, इट इज मेजर्ड इन रेडियंस. और जवाब है सी, थर्ड ऑप्शन. जवाब है सी, थर्ड ऑप्शन. ये आज के 20 सवाल वापस स्कोर कंसेप्ट से जुड़े हुए हमने सॉल्व किए हैं. आशा करते हैं कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है. कल कुछ और ऐसे ही सवालों के साथ वापस मिलेंगे. तब तक के लिए रुक जाते हैं. थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे.